Hi everyone, I'm Sakshi and I welcome you to the B.Ed Notes presented by Train the Teacher. Today everybody, we are going to talk about the assignment of our B.Ed first year. Today in this video, we'll be talking about critical understanding of ICT practical file, okay? It does carry heavy weightage everybody, so it's really important for all of us to prepare it nicely and wisely, okay? जितना इम्पॉर्टेंट है हमें ये जानना कि क्या करना है फाइल में, उतना ही इम्पॉर्टेंट ये है कि हमें क्या नहीं करना है. सो इन दिस वीडियो आई विल बी टॉकिंग अबाउट बोथ. लेट्स गेट स्टार्टेड. We'll start with the index. It's really important for all of us to go through it, and it has to be nicely and neatly maintained everybody. In this video I'll make you go through the assignment file page by page, जिससे कि अगर आपको note down करना हो या बनाना हो on the spot, you can just refer to the video. Okay, first is introduction to ICT, then importance of ICT for students, for teachers, for counselors, for education administrator, for educational researcher. After that we have computer, meaning and its functions and classifications of computer. The fourth one is operating system, introduction and features and functions. Then we have input and output devices, keyboard, mouse, scanner in input, and monitor, printer and sound card in output devices. Right after this we have Windows elements, then network, LAN, MAN and WAN. After this we have MS Word, PowerPoint presentation, MS Excel. Next we have multimedia, elements of multimedia, components of multimedia. We have virus, component of internet, and at the end we have World Wide Web everybody. So this is how our index looks like. If you wish to take a screenshot, go ahead and do that. Now everybody, also you can see, I hope you can see how neatly it is done. आप देख सकते हो कि heading कौन सी है और उसके सब points कौन से हैं. क्यों? For heading I have used a pen marker, okay, and for subheadings I have used a simple black ball pen, okay. देखो headings और उसके सब points. Also you have to be really conscious and cautious while you're preparing the index, because ऐसे हो सकता है कि आप लिखते जा रहे हो but फिर at the end आपके पास content बचा हुआ है और जगह ही नहीं है ना. तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने काफ़ी वेल प्लान्ड तरीके से ये किया था, ओके. एंड जहाँ पे मुझे लगा मुझे एक्सपैंड करना है, आई हैव एक्सपैंडेड. जहाँ पे मुझे लगा कि नो, आई थिंक आई मस्ट नॉट, वहाँ पे मैंने नहीं, बिकॉज आई वॉज ऑल्सो रनिंग आउट ऑफ स्पेस एवरीबडी, ओके. By the way, let me tell you, this file has got full marks, so you must refer to it. You must get or grab everything positive from the file, okay. Great, let's get started. Let's witness the first page everybody. Now it's really important for all of us to have a clear and engaging introduction. The clear and engaging first page, आप देख सकते हो introduction to ICT है यहाँ पे, और यहाँ पे उसकी पिक्चर्स हैं. तो मैं अब आपको एक सबसे इम्पॉर्टेंट टिप देती हूँ, जो कि एक टिप जो हमें करनी चाहिए और एक टिप जो हमें बिल्कुल ही अवॉइड करनी चाहिए. आई स्टार्ट विद द थिंग विच वी मस्ट नॉट डू. सो दैट इज़, आपने फाइल्स में देखा होगा फूल पत्ते बना देते हैं स्टूडेंट्स, राइट. फूल पत्ते बना दिए, यहाँ पे डेकोरेट कर दिया, स्टार्स बना दिए. Please do not do that. It may invite negative marks for you. When I say negative marks, I mean it may invite low marks for you everybody, okay, because this is no school, this is college, that too bachelors of education. आप बच्चों को पढ़ाओगे. It doesn't mean कि आपकी खुद की फाइल बच्चों की तरह होनी चाहिए everybody, okay. So do not do that, please. No fool patti, no stars. The file must look mature. The file must look कि हाँ किसी पढ़े लिखे समझदार बच्चे ने बनाई है, okay. So if you look here, you will not find any content like that, okay. It looks कि हाँ mature file है. Everything is organized in detailed manner with headings and subheadings everybody, okay. And that's how we will proceed. आई होप आपको समझ आई होगी ये बात. विद दिस विल मूव फॉरवर्ड. ICT introduction, and let me take you point by point. You can take screenshot or you can pause the video and write it down.
All right, with this we'll move to page 2. Now in page 2, next tip is waiting for you. The tip is that I hope you can see how clearly it is visible कि heading कौन सी है और सब heading कौन सी है और ये कैसे दिख रहा है. ये obviously दिख रहा है sticky notes और different colors की वजह से. Okay, now everybody, you must also be ready with some sticky notes maybe. Okay, or some you can also get some colored sheets जैसे कि यहाँ पे मैंने यूज़ किया. This is not a sticky note, ये colored sheet थी. I had written the heading, मैंने उसको कट करके पेस्ट किया. These are sticky notes. Okay, so आप भी ऐसा कर सकते हो. And initially I have seen many of my peers, many students use colors. You can do that also, but the only difference is that this would make your file stand out from the rest. Okay, ये एक छोटा सा extra effort है जो आप करोगे, but it will give you really positive results and impression everybody. Okay, और इसमें कुछ भी मेहनत भी नहीं लगी. I just pasted it और last में and then I had added the headings. Simple as that. Okay, so this is second page. Here I've pasted a relevant picture. Importance of ICT technology for students, teachers, counselors, administrators, researchers. So सबसे पहले importance for students. You can have a look. All right, we'll move to the third one. Importance for teachers now. Also everybody, it's really important for you to have enough space. जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे इस heading के बाद I've left 1 2 3 4 lines to start my point. Okay, तो बिल्कुल ही हॉच पॉच नहीं कर देना, बिल्कुल ऐसे गंदा नहीं कर देना. It should look neat and organized. Strong organization and structure should be visible. Okay. Now importance for counselors. You can either pause it or you can take screenshot if you wish to write it right now. Here I have for page 2, I think I missed it. This is page 2. This is page 3, which is page 4 actually. Importance for education administrator. Importance for educational researchers. Now we have the next one, which is computer. Meaning of computer, functions of computer. Everybody, also your writing is going to play a really important role. ऐसे नहीं कि जल्दी जल्दी में गंदा सा कर दिया. No, take your time, write it nicely. Okay, write less but do write nicely. This is important. ओके, ऐसे नहीं कि जितने ज़्यादा पेजेस आप भरोगे उतने ज़्यादा आपको मार्क्स मिलेंगे. नॉट एट ऑल. ये एक मिथ है कि जितना ज़्यादा आप लिखोगे उतने ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे. नहीं, जितना ज़्यादा प्रेजेंटेबल और अच्छा आप लिखोगे, जैसे कि अगर कंप्यूटर के बारे में लिख रहे हो बट आपकी 4 लाइन्स में अगर वो चीज़ डिफ़ाइन हो जा रही है एंड you're confident that you're able to define it nicely and rightly, then you should go ahead with that rather than explaining और गंदा से लिख के. Don't do that. Okay, let me walk you through this. Now you can also see that I've added a relevant picture on almost each page. Okay, now comes a really important part of our assignment, which is classification of computer. यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे writing format change कर दिया है. Now this is one way of writing. Okay, headings, subheading,
हेडिंग दे दी पॉइंट की और वो डिफाइन कर दिया, हेडिंग दे दी और वो डिफाइन कर दिया. नाउ this is second way of writing your responses, and I'm sure you also find it really presentable, right? So only what I've done is similar है, मैं इसको भी वैसे ही कर सकती थी जैसे मैंने लास्ट रिस्पॉन्सेज किए कि हेडिंग दे दी और पैराग्राफ में मैंने डिफाइन कर दिया. बट हियर आई हैव गिवन इट अ हेडिंग एंड देन आई हैव कट सम पार्ट्स ऑफ द पेपर, कलर्ड पेपर, और उसके ऊपर मैंने अपने रिस्पॉन्सेज लिखे हैं जैसे कि आप देख सकते हो. ओके, so this is another way of writing, making your assignment look more engaging and presentable, everybody. Okay, so this is another way. जैसे जैसे हम अभी आगे बढ़ते जाएंगे assignment में, we'll discover more ways of making our boring assignments look really presentable. All right, now we have operating system. Now everybody, again I'll pause you here and I'll make you see the third type of writing your responses or writing your assignment. Heading, subheading, subheading, और उसके बाद जो points हैं, points की heading देखिए मैंने नीचे नहीं लिखा है, मैंने सामने सामने लिखा है. Okay, so this is third way of writing your response. This is fourth way of writing the same response through T-chart, everybody. आप मैंने बीच में लाइन ड्रॉ कर दी है और दो सेपरेट आंसर्स को साइमल्टेनियसली लिखा है यहाँ पे. अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग वे, एवरीबडी. Now you will witness a new way of writing. So we are talking about input devices. I hope you can see what I've done. So first way was this way, everybody. Okay, second way was this one, third way is this one, fourth is this one, and this is fifth one, which is a flow in a flow chart format, everybody. Input devices के बारे में हमें बात करना था. What I had done was कि मैंने flow chart में से present कर दिया कि 3 types: keyboard, mouse and scanner, and then I have also mentioned there points. Now I hope you can see how nicely, neatly it is presented as compared to a conventional, traditional way of writing or presenting it. और साथ ही में इनकी pictures लगा दी हैं. Let me walk you through this. Similar format has been adopted for output devices as well. Also, everybody, I wanted to talk about it using colored pictures. Now on one hand you will see you would want to use black and white pictures, but जब आप इतना effort करोगे तो I would strongly suggest you to go for colored pictures. इतना उसमें खर्चा नहीं आएगा and it does add great value in your file. What I had done, everybody, was I had also not spent a lot of money. What I had done was कि एक शीट पे मैंने 4 पिक्चर्स प्रिंट करवाई. जैसे कि मैं इसका एग्जांपल देती हूँ. ओके, लेट्स टॉक अबाउट दिस. सो एक शीट पे मैंने 4 पिक्चर्स प्रिंट करवाई एंड इट ओनली कॉस्टेड मी 10 रुपीज़ पर शीट. ओके, सो इफ़ यू सी दिस पिक्चर, सो ऐसी 3 पिक्चर्स और थी एक पेज पे.
So each page colored photocopy costed me 10 rupees, and black and white files I have seen with black and white pictures, they actually look very less attractive. So again, call aapki hai, but I'm just suggesting you to go for colored pictures option, or you can also take pictures from newspaper or anything if you struggle to find colored pictures. That's also a good idea. Moving forward, everybody, now we'll talk about Windows elements. Creativity आपकी होनी चाहिए, everybody. Creativity is really important. You can't, as a teacher, you can't be dull. क्योंकि इम्प्रेशन जो हमारे असाइनमेंट चेकर्स हैं उनके ऊपर यही जाएगा कि ये खुद इतनी डल है, ये खुद इतना डल है, तो बच्चों को क्या ये इग्नाइट करेगा, बच्चों की क्रिएटिविटी क्या इग्नाइट करेगा, राइट? सो यू हैव टू बी स्लाइटली कॉशियस विद दैट, कीपिंग दैट पॉइंट ऑल्सो इन माइंड. Now we have network, same format as you can see, LAN, MAN and WAN. एंड ये सारी पिक्चर्स ईजीली गूगल से अवेलेबल, गूगल पर अवेलेबल हैं. यू कैन ईजीली गेट देम फ्रॉम इट. MS Word, as you can see, a simple logo is enough for it. बट पिक्चर्स ज़्यादा छोटी भी नहीं होनी चाहिए एवरीबडी. थोड़ा इम्पैक्ट के लिए मीडियम साइज पिक्चर्स होनी चाहिए. Then we have word processing terminology. PowerPoint presentation. After this we have MS Excel. As we know that the assignment checkers will not go through your assignment file a page by page, but overall impression जो है that is everything everybody, right? यही है overall impression. How neat your file is, how presentable it is, कितना मन लगा के आपने किया, कितना लास्ट मिनट आपने किया है, right? Then we have multimedia and public places. See, again here I've decided to draw the table structure rather than writing it traditionally. Virus. Same as you can see, blocks and headings, and how boring assignment page is turned into a presentable assignment page. See again, and ये तो sticky note ही है. These ones are sticky notes, and then I had added these red headbands for it. Also everybody, many times स्टूडेंट्स फील कि जितने ज़्यादा पेजेस कवर्ड होंगे उतने ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे. ये आप सोच सकते हो, ये आपका कॉल है. सो हियर इफ़ यू यूज़ दीज यूनिक वेज और स्टाइल्स ऑफ राइटिंग, यू विल सी दैट यू विल बी ईजिली एबल टू फिल अप पेजेस एज वेल. आप अगर देखो कि यहाँ पे सिर्फ 4 पॉइंट्स हैं, राइट? अगर मैं नॉर्मल वे में लिखती 4 पॉइंट्स तो मेरा आधे पेज में ही ख़त्म हो जाता है, राइट? और अगर मैं ये वाले पॉइंट्स भी लिखती तो एक पेज में आ जाता. बट अगेन यू हैव टू बी स्मार्ट वाइल डूइंग द असाइनमेंट.
Then we have World Wide Web. And with this, we've reached to the end of our assignment, everybody. Okay, I've covered it in 28 pages, everyone, as you can see. So to get full marks, you have to be creative. Your assignment should look presentable. It should be creative, of course, engaging handwriting, neatly organized, स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन होने चाहिए, बहुत ही रोबस्ट स्ट्रक्चर आपको प्रेजेंट करना चाहिए. ओके as you can see, I've not pasted pictures on all, but mostly, barely 2-3 pages पे नहीं है. ओवरवेलमिंग भी नहीं होना चाहिए. And we've come to an end, everybody. So this was our assignment. वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट्स में बताइए, and please share it with your friends. Till then, happy learning and happy making assignments. Bye bye.